गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के मुताबिक जो कंसेप्ट है साइमल्टेनियस इलेक्शंस का, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का, जिसको हम वन नेशन वन इलेक्शन भी कहते हैं, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा विद इन करंट टर्म ऑफ दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो अगर हम इस कंसेप्ट के बारे में देखें, ये एक ऐसा सिस्टम चाहता है जिसमें कि सभी स्टेट और लोकसभा इलेक्शंस जो हैं वो इकट्ठे एक साथ किए जाएं। इसके लिए जो है इंडियन इलेक्शन साइकिल को रिस्ट्रक्चर करना होगा ताकि इलेक्शन स्टेट और सेंटर के कोइंसाइड हो जाएं। वोटर्स एक ही बार जाएंगे और लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन जो है वो सेम डे सेम टाइम पर वोट करके आएंगे। ठीक है, तो ये आइडिया कोई न्यू नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी एनुअल रिपोर्ट 1983 में भी इसको रेज किया था। लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट्स ने इसको टाइम टू टाइम रेज किया है कंसेप्ट को। फिर पीएम मोदी ने भी 2016 में जब इसके बारे में बात की तो नीति आयोग ने वर्किंग पेपर बनाया इस सब्जेक्ट पर 2017 में। लॉ कमीशन ने भी 2018 में वर्किंग पेपर में कहा कि कम से कम 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस चाहिए होंगी ताकि साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है वो रियलिटी हो जाए। जुलाई 2022 में इशू जो है ये, इसको 22nd लॉ कमीशन को जो है वो रेफ़र कर दिया गया और जो अल्टीमेट जो इस पे एक्शन लिया गया वो था हाई लेवल कमेटी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट कोविंद जी की चेयरपर्सनशिप में बनाई गई सितंबर 2023 में। तो उसने जो रिपोर्ट अपनी मार्च 2024 में सबमिट की है। तो अगर हम उस रिपोर्ट को देखें तो इस पैनल ने रिकमेंड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा ताकि 2029 के जो इलेक्शंस हैं वो सब इकट्ठे हों, लोकसभा के, स्टेट असेंबली के और लोकल बॉडीज़ के। तो उन्होंने टोटल 18 अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में करने को कहा और कई और स्टैट्यूट्स में भी। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ के। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में जो है इलेक्शंस टू म्यूनिसिपैलिटी और जो पंचायत होती हैं वो भी सिंक्रोनाइज कर दिए जाएंगे लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ के साथ। विद इन 100 डेज़ जो हैं जो लोकल बॉडी इलेक्शंस जो हैं वो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ के इलेक्शंस के 100 डेज़ के बीच में कर दिए जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर एक्शन के लिए जो है वो रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स चाहिए होगा, एटलीस्ट 1/2 ऑफ स्टेट्स को रेटिफाई करना होगा। ठीक है, तो इस सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को एक वन टाइम स्टेप लेना होगा जिसमें कि एक स्पेसिफिक डेट उन्हें चूज़ करनी होगी आफ्टर लोकसभा इलेक्शन। उस डेट के बाद सभी टर्म्स ऑफ ऑल स्टेट असेंबलीज जो है वो इलेक्शंस में चली जाएंगी, उनकी पार्लियामेंट टर्म के साथ उनके इलेक्शंस होंगे। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 जो है उसको अमेंड किया जाए। तो इसके लिए तो कोई रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कमेटी ने कहा है कि आर्टिकल 324 भी जो है वो इसमें इंसर्ट किया जाए ताकि पार्लियामेंट के पास लॉ मेकिंग पावर आ जाए कि वो म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत के भी जो है वो इलेक्शंस जनरल इलेक्शंस के साथ कर सके। ठीक है, सिंगल इलेक्टोरल रोल और इलेक्शन आईडी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। तो ठीक है, तो ये जो पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाता होता था ये इलेक्टोरल आईडी, अब उसके लिए जो है सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही सिर्फ जो है वो सिंगल इलेक्टोरल आईडी और इलेक्टोरल रोल और इलेक्शन आईडी जो है वो बनाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो है वो रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी स्टेट्स की। अब इसमें आप सोचो, कई बार क्या होता है, वोटर फ्रॉड चलता है कि आप जो है एक जगह पर आप इलेक्शन में रजिस्टर्ड हो, आप अपनी होम सिटी में भी रजिस्टर्ड हो, जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर भी रजिस्टर्ड हो, तो आप कई बार और कई लोग ऐसा करते हैं कि वो दोनों जगह वोट करके आ जाते हैं जबकि वो एक ही जगह पर रजिस्टर्ड है। बट एक बार जब साइमल्टेनियस इलेक्शन शुरू हो जाएंगे तो वो पर्सन सिर्फ एक ही जगह पर वोट कर पाएगा। तो ये वोटर फ्रॉड का जो कंसेप्ट है वो भी ख़त्म होने लगेगा इससे। ठीक है, तो अगर हंग हाउस आ जाता है तो फ्रेश इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे लोकसभा और स्टेट असेंबली में। जितना भी अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ द हाउस रह गया है सिर्फ उतने वार्ड के लिए। ठीक है, तो लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट इसके लिए जो भी चाहिए होगी स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले से ही जो है वो तैयारी रखेगा। कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया कंसेप्ट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, जो कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो जर्मनी में होता है कि मतलब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया गवर्नमेंट के खिलाफ तो उसको पॉजिटिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस माना जाएगा और जो अपोजिशन है या दूसरा जो गुट है वो पावर में आ जाएगा। उसको जो है वो इसमें नहीं माना गया इस कंसेप्ट में। ठीक है, कमेटी ने कहा है कि जो पार्लियामेंट्री एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है वो ही अप्रोप्रिएट है, कोई चेंज करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भास्कर प्लेटफॉर्म।
टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो DPIIT जो है उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्लान किया है भास्कर नाम से, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री इनिशिएटिव। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंडर ही ये इनिशिएटिव होगा ताकि इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सके। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें सेंट्रलाइज, स्ट्रीमलाइन और कोलैबोरेशन एनहांस की जाएगी की स्टेक होल्डर्स के बीच में विद इन द एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, जैसे कि आपके स्टार्टअप्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, मेंटर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं। तो आइडिया तो ये है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डिजिटल रजिस्ट्री बनाई जाए सभी स्टेक होल्डर्स की जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में काम करते हैं। तो अगर हम इसके की फीचर्स देखें तो नेटवर्क और कोलैबोरेशन प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड एक्सेस देगा रिसोर्सेज को, फिर एक पर्सनलाइज आइडेंटिफिकेशन बनेगी, एक यूनिक भास्कर आईडी बनेगा सभी स्टेक होल्डर्स का ताकि वो इसको एक्सेस कर सके। पावरफुल सर्च फीचर्स भी होंगे इस पे प्लेटफॉर्म पर, और एक तरह से ये व्हीकल बन जाएगा इंडिया की ग्लोबल रेपुटेशन एज अ ग्लोबल हब फॉर इनोवेशन का, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरियाज। सो ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने जो फंड्स हैं वो डबल कर दिए हैं, जो एलोकेशन हुई है फंड्स की रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज प्रोग्राम में 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो रिवाइज्ड एलोकेशन जो है वो 1000 करोड़ की है, जो पहले 500 करोड़ होती थी। इसमें 500 करोड़ स्टेट्स भी डालेंगे अपनी तरफ से, तो टोटल फंड्स अबाउट 1500 करोड़ हो जाएंगे स्टेट्स जो है इस साल के लिए। तो इससे हम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सिक्योरिटी नीड्स को जो है वो बूस्ट कर सकेंगे, ठीक है, इन रीजन्स में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज़ हैं। तो इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना इंसर्जेंसी और एक्सट्रीमिज्म वाले एरियाज़ में। तो एक ये एज अ सेपरेट वर्टिकल काम करेगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के, ताकि ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी दी जा सके, ठीक है। सेंटर और स्टेट्स इसमें 60-40 रेशियो का जो है वो फंडिंग शेयर करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। तो नक्सलिज्म आपको पता है कि नक्सलबाड़ी अपराइजिंग जो 1967 में हुई थी, वहाँ से ये बर्थ इसका शुरू हुआ। एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, काइंड ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी अगेंस्ट द स्टेट है ये। और चाइनीज कम्युनिस्ट आइडियोलॉग और लीडर थे जो माओ जेडोंग, उनके जो है नाम पर इसको चलाया जाता है माओइज्म। ऑब्जेक्टिव इनका क्या है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन करें वर्किंग जो लैंड की वर्किंग पीजेंट्स को, और जो कंट्रोल ऑफ लैंडलॉर्ड जो है उसको तोड़ा जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं नक्सलिज्म को काउंटर करने के लिए? गवर्नमेंट ने मल्टी एजेंसी सेंटर बनाया है सेंट्रल लेवल पर, स्टेट मल्टी एजेंसी सेंटर बनाया है स्टेट लेवल पर, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की क्रिएशन की गई है, समाधान स्कीम जो सबसे फेमस है 2017 में वो लॉन्च की गई, और यूनियन गवर्नमेंट ने इवन कई जो है माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को UAPA के अंदर बैन भी किया हुआ है, ठीक है। और भी बहुत से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं नक्सलिज्म को काउंटर करने के लिए, हम कई बार इसको टाइम टू टाइम पढ़ते रहते हैं, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिक्योरिटी टॉपिक, सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है VL SR SAM। तो ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है जैसे आपको बताया। तो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल चांदीपुर से, उड़ीसा के कोस्ट के पास से। तो ये एक शिप बॉर्न वेपन सिस्टम है, डिज़ाइन किया गया है न्यूट्रलाइज करने के लिए वेरियस एरियल थ्रेट्स एट क्लोज रेंजेस। मिड कोर्स फ्लाइट के बीच में ही ये फाइबर ऑप्टिक गायरोस्कोप बेस्ड इनर्शियल गाइडेंस मैकेनिज्म का यूज़ करते हुए जो है ये फायर होता है। इसको DRDO ने डेवलप किया है, लगभग 170 किलो इसका वेट है, सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज़ करता है ये। मैक 4.5 की इसकी स्पीड है, और ये वेपन जो है सिस्टम जो है ये 16 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड रीच कर सकता है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटका ने इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी को मार्क किया है रिसेंटली 2500 किलोमीटर लॉन्ग ह्यूमन चेन, यस 2500 किलोमीटर की ह्यूमन चेन बनाकर एज अ सिंबल ऑफ इक्वालिटी, यूनिटी, फ्रेटर्निटी एंड पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? एक एनुअल सेलिब्रेशन है जो 15 सितंबर को हर साल ऑब्जर्व की जाती है। UN जनरल असेंबली ने इस दिन को 2007 में इस्टेब्लिश किया था। 15 सितंबर को इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि उसी दिन एनिवर्सरी होती है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन डेमोक्रेसी अडॉप्ट की गई थी 1997 में। तो ये जो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन डेमोक्रेसी है, उसके लिए कतर ने स्पेयर हेड किया था कैंपेन कि इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाना चाहिए। फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2008 में मनाया गया। तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है क्या?
एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पार्लियामेंट्स की, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1889 में पेरिस में। ये फैसिलिटेट करता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एम्पावर करता है पार्लियामेंट्स और पार्लियामेंटेरियंस को कि वो पीस, डेमोक्रेसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड जो है वो प्रमोट कर सकें। तो ये फर्स्ट मल्टीलैटरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में जो एनकरेज करती है कोऑपरेशन और डायलॉग बिटवीन ऑल नेशंस। तो टुडे जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है वो 179 मेंबर पार्लियामेंट्स और 13 एसोसिएट मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं निधि कंपनीज। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो हैं अंडर कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, उन्होंने पेनलाइज किए हैं ओवर 2 डजन निधि कंपनीज फॉर वायलेशंस ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोविजंस। तो निधि कंपनी रिकग्नाइज की गई है सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर, और ये ऑपरेट करती हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया के अंडर। ठीक है। तो ये फॉर्म की जाती हैं कि बोरो और लैंड की जा सके मनी टू इट्स मेंबर्स। ठीक है। तो हैबिट ऑफ सेविंग बेसिकली जो मेंबर्स के अंदर है उसको जो है प्रमोट करने के लिए बनाई जाती हैं ये, और म्यूचुअल बेनिफिट के साथ जो है मेंबर्स काम कर सकते हैं। इसको कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है आरबीआई का, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपनीज एक्ट के अंदर काम करती है। मिनिमम इसमें 7 मेंबर्स होने चाहिए निधि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, जिसमें से 3 जो हैं वो डायरेक्टर होंगे इस कंपनी के। ठीक है। अब क्या एक्टिविटीज़ में प्रोहिबिट होती है निधि कंपनी के लिए? ये जो है चिट फंड्स, हायर परचेज फाइनेंस, लीजिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस या सिक्योरिटीज़ बिजनेस में नहीं काम कर सकती। कोई भी ये डिपॉजिट या लैंडिंग नहीं कर सकती किसी और पर्सन को अदर दैन इट्स मेंबर्स। निधि कंपनीज जो है कोई प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स या कोई डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो इशू नहीं कर सकती। निधि कंपनीज कोई करंट अकाउंट भी नहीं खोल सकती अपने मेंबर्स का। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेमोग्राफी। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मेमोग्राफी जो है कैल्शियम बिल्डअप जो है ब्रेस्ट के आर्टरीज़ में अगर डिटेक्ट होता है मेमोग्राफी से, तो ये इंडिकेट कर सकता है कि हार्ट डिसीज़ जो है वो प्रोन है वो लेडी। ठीक है। कुछ रिसर्च टीम्स ने ये रिपोर्ट किया है रिसेंटली। तो मेमोग्राफी क्या है? एक एक्सरे इमेजिंग मेथड होता है जो जनरली ब्रेस्ट को एग्जामिन करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके कैंसर या फिर अदर ब्रेस्ट डिसीज़ की। ठीक है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है मेमोग्राम्स को या मेमोग्राफी को यूज़ करते हैं टू लुक फॉर अर्ली साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बिफोर सिम्टम्स डेवलप। ठीक है। तो इसको स्क्रीनिंग मेमोग्राम भी कहते हैं। तो इसके थ्रू जो है मेमोग्राफी के थ्रू कोई भी तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ को जो है वो पकड़ा जा सकता है पहले ही, जब चाहे वो सिम्टम कोई एमर्ज भी ना हुआ हो, जैसे कोई लंप, पेन, निपल डिस्चार्ज या कोई ब्रेस्ट स्किन चेंजेस। तो इसको हम डायग्नोस्टिक मेमोग्राम कहते हैं। कैसे ये काम करता है इसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बहुत ये एडवांस्ड, आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is one nation, one election. This topic is important for your polity section. So as per the government officials, the concept of simultaneous elections for Lok Sabha and state assemblies, which is also being referred to as the one nation, one election, will be soon implemented within the current term of the present government. So what is the concept of simultaneous elections in India? So this concept envisions a system in which all state assembly and Lok Sabha elections must be held simultaneously. So which will entail restructuring of the Indian election cycle so that elections to the state and center will coincide. So this would mean that the voters will go one time and they will vote for the members of Lok Sabha and state assemblies on the same day and at the same time, okay, or in a phased manner also. So the idea of returning to simultaneous elections was raised in the Election Commission of India's annual report in 1983. It was also mentioned in Law Commission's report in 1999. And following the reintroduction of this idea by PM Modi in 2016, the Niti Aayog prepared a working paper on this subject in 2017. So the Law Commission stated in its 2018 working paper that at least 5 constitutional recommendations would be required to make simultaneous elections a reality in India again. So in July 2022, this issue was referred to the 22nd Law Commission, and it recommended various steps how to conduct simultaneous elections in India. It also suggested that the addition of a new chapter on simultaneous polls should be added in the Constitution of India. But the major step that the government took was the high-level committee on one nation, one election, which was chaired by the former President of India, President Ramnath Kovind, and it was constituted in September 2023. And this committee submitted its report in March 2024. So what are the key recommendations of this report, this committee?
So this panel recommended amending the constitution so that elections for the Lok Sabha, all state assemblies and local bodies can be held by 2029. So this committee suggested 18 amendments to the constitutions and other statutes. In the first step, this committee said that simultaneous elections can be held for Lok Sabha and state assemblies. And in the second step, elections to the municipalities and panchayats will be synchronized with the elections of Lok Sabha and state assemblies. This will be done in such a way that local body elections are held within 100 days of the elections to the Lok Sabha and state assemblies. So, but this would require ratification of not less than one half of the states. Okay, so the first step requires synchronization. The government should take a one-time step where they pick a specific date for after Lok Sabha election, and after this date, the terms of all state assemblies that have elections will end along with the parliament's term. Okay. To effect these changes, the panel has recommended amendments to Article 83 and Article 172 of the Constitution. For this, no ratification would be required by the states, and for inserting Article 324A, which means that Parliament may make a law to ensure that elections to municipalities and panchayats can be held together with general elections. So this may require state ratification. So it also envisions a system in which a single electoral roll and electoral photo identity cards will be used for elections. So for this, committee recommended amending the Article 325 of the Constitution, and now from then onwards, only Election Commission of India would be able to prepare a single electoral roll and election ID. So this would require state ratifications also. Okay, so just imagine this scenario. This would weed out the problem of dubious voters or voters who are fake voters or double voting. Okay, when you are voting only at one day, it would not be possible for you to be present at two locations simultaneously. Okay, or within one election cycle, it would not be possible for a voter to vote at two different places simultaneously. Okay, so in the case of hung house, what would happen is that in case hung house is there or a no confidence motion is there, fresh elections would be conducted to constitute the new Lok Sabha or state assembly only for the unexpired term or the leftover term for the house. Okay, so the Election Commission of India would plan ahead with the state election commissions for things like manpower, polling duty, polling staff, security forces, voting machines, so that fair elections can be ensured at all levels of the government at the same time. The committee has rejected the concept of constructive vote of no confidence, which means that in case of a no confidence motion being passed against a government, it would be considered as a positive vote of confidence in the alternative leader or the opposition leader. Okay, so this committee has said that prevailing parliamentary practice in this regard is appropriate and it does not require any change. So the next topic is Bhaskar platform. This topic is important for your economy section. So DPIIT is set to launch a groundbreaking digital platform called Bhaskar. So Bharat Startup Knowledge Access Registry Initiative under the Startup India program is aimed to strengthen India's startup ecosystem, and it is a platform designed to centralize, streamline, and enhance collaboration among key stakeholders within the entrepreneurial ecosystem, including startups, investors, mentors, service providers, and government bodies. So the primary goal of Bhaskar is to build the world's largest digital registry for stakeholders within the startup ecosystem. Okay, so this would enable networking and collaboration among the key stakeholders. It would also provide a centralized access to resources to the users. It will create personalized identification by assigning a unique Bhaskar ID to every stakeholder. It will also enhance discoverability by giving powerful search features. So this will basically serve as a vehicle for promoting India's global reputation as a global hub for innovation. Okay. So the next topic is road connectivity project for left-wing extremism affected areas. This topic is important for your security section. So center has doubled the allocation of funds under the road connectivity project for left-wing extremism affected areas for financial year 2024-2025. So this revised allocation of 1000 crore from the central government is double the amount of 500 crore rupees which was previously allocated, and this would also require 500 crore separately from the states. So it would make the total funds for the project would around
1,500 crores, okay, for this year. So this will boost socioeconomic development and support security needs in these regions. So what is this road connectivity project for left-wing extremism affected areas? So this aims to improve infrastructure in regions which are impacted by insurgency and extremism, and it will be acting as a separate vertical under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, and it will provide all-weather road connectivity to these regions. So under this scheme, the center and states will share the expenditure in 60 to 40 ratio, same as under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. And recently, Ministry of Rural Development has been designated as the nodal ministry for this scheme. So what is Naxalism? We all know the birth of Naxalism can be pinpointed to the Naxalbari uprising of 1967. It is basically an extremist ideology, and it is a form of armed insurgency against the state motivated by the Maoist ideology. So why Maoist? Because it is it has been promoted, or it is being inspired by Mao Zedong, the Chinese communist leader. The objective of their fight is redistribution of land to the working peasants, which was actually controlled by landlords for generations. Okay, so what are the steps which have been taken by the successive governments to counter Naxalism? So governments have taken several steps in the law and order approach as well. Like the government has set up the multi-agency center at the central level and the state multi-agency center at the state level. And the government has also created the central armed police forces to carry out counter-insurgency strategies. And the union government has also launched Samadhan scheme in 2017. The union government also has banned several of the CPI Maoist organizations under the UAPA, okay, as recently as in 2009. So the next topic is VLSR SAM. This topic is important for your security section. So recently India has successfully test fired the vertical launch or short range surface to air missile from Chandipur, Odisha. So, what is vertical launch short range surface to air missile? So, it is a ship-borne weapon system which is designed to neutralize the aerial threats at close ranges, including sea skimming targets. During the mid-course flight, the missile uses the fiber optic gyroscope based inertial guidance mechanism, while the terminal phase uses the active radar homing. It is developed by the DRDO, and it weighs around 170 kg, and it uses solid propellant. With a maximum speed of Mach 4.5, the weapon system can reach an altitude of 16 kilometers. Okay. So the next topic is International Day of Democracy. This topic is important for your social issues. So Karnataka has recently marked the International Day of Democracy by forming a historic 2,500 kilometer long human chain. Yes, 2,500 kilometers. So, what is International Day of Democracy? It is an annual celebration of democracy on September 15th. So, UN General Assembly in 2007 established this day to emphasize the significance of democracy. So, September 15 was chosen to coincide with the anniversary of the Inter-Parliamentary Union's Universal Declaration on Democracy, which was adopted in Geneva in 1997. So surprisingly, Qatar spearheaded this campaign to observe an International Day of Democracy at the UN, and the first ever International Day of Democracy was held in 2008. Okay. So what is Inter-Parliamentary Union? So IPU is the International Organization of Parliaments, and it was established in 1889 in Paris to promote representative democracy and world peace. So it facilitates parliamentary democracy and empowers parliaments and parliamentarians to promote peace, democracy, and sustainable development around the world. It was the first multilateral political organization in the world, encouraging cooperation and dialogue between all nations. So today, the IPU comprises of 179 member parliaments and 13 associate members. Okay. So the next topic is Nidhi companies. This topic is important for your economy section. So recently, the registrar of companies under the Corporate Affairs Ministry has penalized over 24 Nidhi companies in about a fortnight for alleged violations of Companies Act provisions. So what are Nidhi companies?
It is recognized, so a Nidhi company is recognized under Section 406 of the Companies Act of 2013 and typically operates in the non-banking financial sector of India. So it is formed to borrow and lend money to its members. So it inculcates the habit of saving among its members and works on the principle of mutual benefit. So it is not required to receive the license from the RBI because they are registered with the Companies Act. So a minimum of 7 members is required to start a Nidhi company, out of which 3 members must be the directors of the company. So what are the activities which are prohibited in the Nidhi company? So it cannot deal with chit funds, hire purchase finance, leasing finance, insurance or securities business, and it is strictly prohibited from accepting deposits from or lending funds to any other person except the members. Nidhi companies should not issue preference shares, debentures, or any other debt instrument also in any manner, name, or form, and they cannot even open current accounts with their members. Okay. So the next topic is mammography. This topic is important for your social issues and your science and tech section. So calcium buildup in breast arteries detected by mammography might indicate a higher risk for heart disease. So this has been observed by 2 research teams reported recently. So what is mammography? So it is an X-ray based imaging method which is used to examine the breast for early detection of cancer and other breast diseases. So healthcare providers use mammograms or mammography to look for early signs of breast cancer before symptoms develop. This is called a screening mammogram, and they also use mammography to look for any abnormalities if you develop a new symptom like any lump, pain, nipple discharge, or breast skin changes. This is called the diagnostic mammogram. Okay, so how does it work? You do not need to know about the entire process. This is very technical. So this is the only thing that you'd want to know. You should be knowing about it. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.